Good evening, I'm Yash Chawla. You're watching CricBait IPL Adda on Editor G. काफी interesting match है आज. Match इसलिए interesting है because it is the match between Delhi Capitals and KKR. क्यों interesting है match? Because both these two teams are lying in the second half of the points table. नजर डालते हैं आज के मैच में जल्दी से. ये मैच है आज Kolkata Knight Riders versus the Delhi Capitals. It will be played in Mumbai in a short while from now. And to talk about this match, I have with me Amit Kaushal, and we'll also be joining in soon with another guest. Amit bhai, पहले तो आपसे मैं यही पूछूंगा, prediction बता दो आपका जल्दी से between these two teams. What is your prediction? Well, yes, my prediction is that I would like to go with Delhi, but I would go with KKR. Why so? मतलब ऐसा क्यों? मतलब प्यार नहीं है क्या KKR के लिए? Delhi, for obvious reason. We are in Delhi, so I have that soft corner for that team. But the thing is that in my view, even though KKR has lost previous matches and they are not in a very good form right now, if we take consideration of the last 3-4 matches, but still what I feel is that Delhi misses that X factor. Yeah. Delhi doesn't have that X factor of Andre Russell or someone like Sunil Narayan, or even the X factors like we have seen in the previous matches of Gujarat and all. So Delhi lacks there, even though it's a good team. अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि a regular team full of players who contribute from time to time versus a team without good players but an X factor, what would you prefer? In IPL, I would go with X factors for this IPL, and the reason why I will say is that in this IPL we have noticed good bowling, good batting, good fielding. Everything is going. I mean, nobody can say that it's a batsman-friendly IPL. It's a bowler-friendly IPL. Bowlers are doing well. Batsmen are doing well. The only thing which matters is वो last 2 overs में धोनी 6 मारेगा. That is the thing which happens, right? Which is in Gujarat. I mean, Rashid Khan would hit. MS Dhoni would hit. So इसीलिए मैं कह रहा हूँ that in this IPL, particular IPL, even though in general I'm not a big fan of having an X factor, I'm mostly a fan of being consistent players who perform consistently. But this IPL it's different. You need X factors. Okay, जल्दी से हेड टू हेड पे नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, बिकॉज इंटरेस्टिंग है हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीमों का अगर देखा जाए तो द नंबर ऑफ विन्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स is slightly less as compared to Kolkata Knight Riders, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है अमित. कहीं ना कहीं पिछले मैच में जो हुआ है, जो कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस था, उससे आप इम्प्रेस हुए या नहीं? हाँ, डेफिनेटली कुलदीप यादव, मैंने जैसा बोला, सारे बॉलर्स, सारे बैट्समैन कहीं ना कहीं हमें जरूर इम्प्रेस कर रहे हैं, एंड इट्स अ रियली गुड टूर्नामेंट टू हैव. और कुलदीप यादव ने डेफिनेटली पिछले मैच में काफी इम्प्रेस किया. इवन दो स्पिनर्स इस आईपीएल में उतने अच्छे से नहीं चल रहे हैं जैसा दे हैव परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लास्ट आईपीएल इन यूएई. Definitely the tracks are different here. I am more excited about the pace bowlers here. They are doing definitely good. I mean, just looking at Mohammad Shami and how Umesh Yadav is bowling, it's a treat to watch. It's a treat to watch. Toss का update ये है कि ऋषभ पंत has won the toss and Delhi has decided to bowl. Abhinav, if you can hear us now, what is your prediction? अब तो आपको ये भी पता चल गया कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है पहले. Okay, there seems to be some problem. But अमित भाई आपसे दोबारा आते हैं. ये जो टॉस का फैक्टर है, आई मीन इस आईपीएल में शुरुआत में बोला गया था कि टॉस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट टॉस फैक्टर इतना अच्छा नहीं हुआ है. इनफैक्ट अब देखा जाए तो राजस्थान इज आल्सो डिफेंडिंग. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स एंडेड अप डिफेंडिंग सम ऑफ द अदर स्कोर्स. मतलब इतना भी लॉपसाइडेड नहीं जितना शुरुआत में था, राइट? That's true. वो मेजर थिंग इज कि ड्यू फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं आ रही है, तो it's a very even contest. Since it's a very even contest, so definitely, I mean, we cannot say that toss is making much of a difference here. Toss is not making much of a difference. दिल्ली में थोड़े चेंजेस होने वाले. प्लेइंग 11 का ग्राफिक हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे, बट चेतन सकारिया इज कमिंग बैक टू दिल्ली कैपिटल्स, प्लेइंग हिज फर्स्ट आईपीएल मैच फॉर दिल्ली कैपिटल्स. को डेब्यू कैप मिल चुकी है. अमित भाई, राजस्थान रॉयल्स में आपने देखा था चेतन सकारिया को लास्ट सीजन में और लास्ट सीजन में भी.
the kind of performance he has put up. I mean, लेफ्ट हैंडर है, आप भी लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक्साइट करते हो? इस बार लेफ्ट हैंडर बॉलर्स ने बहुत एक्साइट किया है. इवन यू नो राइट फ्रॉम चौधरी फ्रॉम CSK and Yash and I mean all the left hand pace bowlers have done exceedingly well here. So Okay. I have high hopes. Chetan, I hope that he will do good. Let's Okay. see. अब दिल्ली में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं. पहले तो नजर डालते हैं उनके जो ओपनर्स हैं, पृथ्वी शॉ एंड डेविड वार्नर. आई मीन, कैन यू कॉल देम द बेस्ट ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2022 ऑलरेडी? मतलब आधा ही टूर्नामेंट हुआ है. Yes, but I will also Shikhar Dhawan's team has also has performed much well. So मैं ये कह सकते हैं कि they are at par with them. Okay, if not the best, then one of the best. Okay, but how do you rate Rishabh Pant's captaincy here? I mean, जो अभी तक आपने देखा है 7-8 मैचेस में दिल्ली के लिए, वो where do you rate Rishabh Pant's captaincy? He has to learn more. He has to, what we saw during the last match, वो जो last over में हुआ था, that shouldn't have happened at this stage. So, he should have that aggression. अच्छा है, aggression is good. He should have that controlled aggression. So he has to cover a lot of a lot of ground here in captaincy, and of course Indian team is also looking towards him कि वो आगे चल करके Indian team को भी lead कर सकता है. So we have high hopes, but till now he has been just average. That's what I उसी सवाल को मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ. KKR के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, पहले तो उनकी कैप्टेंसी आप बताइए. How impressed are you? And if you were the national selector and had to pick between Rishabh Pant and Shreyas Iyer as a future India captain, who would you pick? Shreyas Iyer without any doubt for the captaincy purpose. As I said, Rishabh Pant has to learn a lot, and captaincy is a totally different different thing. It shouldn't be measured with the talent. At least in cricket, we all know that captaincy is a totally different ball game. जरूरी नहीं है कि आप टीम के सबसे अच्छे प्लेयर हो तो आप सबसे अच्छे कैप्टन भी हो सकते हो. वी ऑल नो दैट, राइट? तो श्रेयस अय्यर has shown lot of maturity in comparison to Rishabh Pant. So that's one thing. And right now we see that KKR is lot of dependent on Shreyas Iyer. I mean, उसकी बैटिंग चलनी चाहिए. ओके, बैटिंग चलनी चाहिए. जल्दी से हम डालते हैं नजर पॉइंट्स टेबल पे, बिकॉज कुछ बदलाव होने चाहिए, होने वाले हैं. पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं सबसे पहले, बिकॉज okay, we'll look at the Delhi Capitals का playing 11 first. It is Prithvi Shaw, David Warner, Mitchell Marsh, Rishabh Pant, Lalit Yadav, Robin Powell, Patel, Akshar Patel and Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Fizz and Chetan Sakaria. इनके बारे में तो बात हो गई है, बट कहीं ना कहीं अमित भाई, ये ऑक्शन के टाइम जो स्ट्रैटेजी थी, ओवरसीज प्लेयर्स ज्यादा इन्होंने ज्यादा खर्चा किया नहीं था. उसके बाद में ये लोग जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेसिफिकली जब मिचेल मार्श को कोविड हो गया था, टिम साइफर्ट वाज आल्सो आउट, तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा प्लानिंग एग्जीक्यूशन थोड़ा कम था IPL ऑक्शंस के टाइम इनका. Yes, that's correct. See, IPL में हम लोगों ने हमेशा ये चीज नोटिस की है that it's just a 20 overs game, right? और 20 overs game में bowlers अगर आपकी टीम के better हैं तो you have an advantage. Okay, और that's the fire power जो कि गुजरात की टीम ने दिखाया है हमारे पास, हमें SRH ने दिखाया है. That is why they are at the top. आप बॉलर्स अच्छे नहीं होंगे, you will struggle. चेन्नई स्ट्रगल कर रही है, they do not have. Even Rajasthan, definitely. Batsmen are going to hit. See, it's just a 20 over game. Batsmen are going to hit. They all are good batsmen. We all know. Bowlers are the one who are going to create the difference here. So that's definitely wise words. Batters win you matches, bowlers win you tournaments. लेकिन अगर Mitchell Marsh is coming back to Delhi Capitals after a COVID related long layoff. Injury भी थी, जो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान में पिकअप करी थी, वहां खेल नहीं पाए. अब वापस आए, एक मैच खेला, फिर कोविड हो गया, फिर वापस आए. कहीं ना कहीं हाउ डू यू थिंक मेंटली ही इज डीलिंग विद दैट, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी गेम टाइम फॉर द लास्ट आई थिंक मंथ एंड हाफ और 2, और फिर सडनली यू प्ले इन द IPL. Yes, that's true, but at this level you expect people to perform, right? So that's true, but here is where the captain also comes into picture, and the coach and all the team management also comes into the picture, that how much they are able to motivate him.
and do goods. We have seen that even Russell was struggling during the initial matches, and now he has come back. I mean, he has come back with a bang. Shoulder Okay. injury को लेकर के Russell was also struggling. तो मैं कहता हूँ, of course, the players at this level उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. They will perform. If they can perform, they will definitely perform. It doesn't matter to them कि यार अभी कुछ समय तक वो बाहर रहे थे. But the team management, captains, they all come into picture here. So that is where Rishabh Pant has to Okay. take the command. Yeah. ओके, आखिरी सवाल दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, देन वी विल स्विच फोकस टू केकेआर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले मैच में देखी गई थी, कुलदीप यादव के वो 4 विकेट, एंड आई थिंक दैट फायर was there, and also to play and perform against your former team. How happy are you for Kuldeep Yadav, and do you think he has enough credentials now to stake a claim in the World T20 squad? It's going to be tough. One match, Kuldeep Yadav, we all know how talented he is. He has performed well before also, but once in this Indian team has so much of bench strength now, that once you are gone, it's very tough to come back. So I hope that the consistency of Kuldeep Yadav comes up, और इस पूरे टूर्नामेंट में जैसा परफॉर्म उन्होंने लास्ट मैच में किया, he keeps performing, so definitely there is a good chance that he can come back. Okay, before we look at Kolkata Knight Riders' playing 11, जल्दी से नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे, बिकॉज कुछ चेंजेस होने वाले लग रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है. टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल इज प्रीटी मच सॉर्टेड. कोई चेंजेस वहां दिखाई नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि ये दोनों टीमें शायद 7वें और 8वें पे. तो नजर डालते हैं पेज नंबर 2 पे. पेज नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. अभी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इफ दिल्ली कैपिटल्स विन, they will probably jump to the 5th spot. If KKR win, they'll probably jump to the 6th spot. कुछ भी हो सकता है, पता नहीं. तभी तो ये मैच इतना इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन टू स्टे रेलेवेंट इन आईपीएल, नंबर 1, एंड टू गेट इनटू द टॉप ऑफ एंड इवेंचुअली इनटू द प्लेऑफ्स. प्रेशर, अमित भाई, इज ऑन केकेआर नाउ, बिकॉज 7 मैच 8 मैच 3 विंस, और नेट रन रेट इतना अच्छा नहीं जितना दिल्ली का है. राइट, दैट्स ट्रू. ये सही है. और प्लस कोलकाता के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है दैट सुनील नारायण शुड क्लिक. ठीक है, सुनील नारायण उनका एक तरह से ट्रम्प कार्ड है, एंड ही हैजंट परफॉर्म्ड as how Sunil Narayan has used to. He is a match winner, both at bowling also or batting also. So Sunil Narayan is someone who needs to click. We all know Russell वगैरह, and also Venkatesh Iyer. मेरा अगले सवाल वही था आपसे कि आपने उनको रिटेन किया, आपने उनको डेजिग्नेटेड ओपनर की जगह भी दी, और फिर उनकी पार्किंग छीन लिया आपकी, और अब आप सुनील नारायण को वापस ट्राई कर रहे हो जो आपने 4 साल पहले ट्राई किया था और परफॉर्म भी किया था. तो ये सही कितना है आपके हिसाब से? एंड आई थिंक आज थोड़े से डेब्यूटेंट्स भी हैं. बाबा इंद्रजीत इज गोइंग टू प्ले, हर्षित राणा इज गोइंग टू मेक हिज डेब्यू फॉर केकेआर. ओवरऑल इफ यू सी, इतने चॉप एंड चेंज चल रहा है इस टीम में, स्टेबिलिटी का कुछ ना कुछ तो इशू है. Yes, that's true. Sunil Narayan ko opener, I'm not very happy with that decision. Sunil Narayan is someone like Rashid. वो last में when you need that firepower, he can provide. During the opening, I'm not very much sure. Venkatesh Iyer is very talented guy. We have seen in the last IPL how he performed. But is he a one-season wonder? I hope not. I hope not. बट बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अभी इसको खिला इसलिए रहे बिकॉज क्योंकि आपने रिटेन किया था और आपका ईगो है बीच में, वरना इसकी जगह भी नहीं बनती प्लेइंग 11 में, क्योंकि बॉलिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है. हाँ, बॉलिंग ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बैटिंग में इज नॉट क्लिकिंग. तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है विथ हिम, और आई थिंक केकेआर को इसका लॉस हो रहा है. केकेआर को एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, इन लोगों के परफॉर्म ना करने की वजह से. इनफैक्ट कमेंट भी आया साहिल कादिर सिंह, क्या केकेआर अब अपनी परफेक्ट 11 ढूंढ पाई है? ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं और आज 3 चेंजेस. हाँ, मतलब ये थोड़ा अनलाइकली होता है ना आईपीएल में. यू यूजुअली मेक अ कपल ऑफ चेंजेस, इंजरी फोर्स चेंजेस तो होते हैं, बट 3 चेंजेस, ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर लिया. अब क्या व्हाट नेक्स्ट? कप्तान चेंज, बिकॉज़ वो भी कर चुके हैं पास्ट में केकेआर. देखो, इस वक्त तो डेस्परेशन है केकेआर के साथ, जैसा लास्ट 3 मैचेस में उनके साथ हुआ है. सो इस वक्त वो डेस्परेट है, एंड एट द सिचुएशन वेयर दे आर, उन्हें किसी तरह से टॉप 4 के अंदर आना है. एंड everybody knows that they can because of their bowling. Because they did it last year. They did it last year, and they have the bowling power of that. Umesh and Southee are doing excellent.
तो उनके पास है, और इवन सुनील नारायण एज अ बॉलर वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू। तो उनके अंदर है, वो बैटिंग में नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, सब कुछ श्रेयस अय्यर पे ही डिपेंडेंट हो जाता है एट लास्ट जाकर के उनका। But do you think is Kolkata over dependent on Andre Russell? yes he is, वो डेफिनेटली दे आर, और नॉट ओनली इन बैटिंग बट आल्सो इन बॉलिंग। वो जो मिडिल ओवर्स में आकर के एंड्रे रसेल्स विकेट लेता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन हिम, और प्लस बैटिंग में तो दे आर डेफिनेटली, ही इज द एक्स फैक्टर फॉर देम। He is the X factor for it. And जल्दी से नजर डालते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप पे। सबसे पहले पर्पल कैप देखते हैं, बिकॉज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ आईपीएल 2022 इज मिस्टर युजवेंद्र चहल। मैं तो बहुत खुश हूँ, राजस्थान के हैं, तो मजा आ रहा है देख के इनको। आरसीबी जरूर मिस कर रही होगी। ऑरेंज कैप पे नजर डालते हैं। ऑरेंज कैप इज आल्सो प्रीटी मच वन साइडेड, 499 रन्स इन 8 मैचेस। इट इज द बिग मैन जॉस बटलर स्कोरिंग सो मेनी रन्स। बट मैं आपसे बात करूंगा अमित भाई कल रात के मैच की, ये कितनी बार होगा यार? मतलब ये गुजरात कैसे निकाल लेती है मैचेस ऐसे? गुजरात, आई मीन आई डोंट नो, फ्रॉम द फर्स्ट मैच इटसेल्फ आई वाज लाइक कि यार ये टीम में कुछ अलग दिख रहा है। हार्दिक पटेल, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टीम में, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टीम में। अगर आप ऐसे देखो तो सच में वो नहीं दिख रहा है उसके अंदर, बट उस टीम में एक्स फैक्टर ही एक्स फैक्टर्स है। उस टीम में कंसिस्टेंसी कम है, एक्स फैक्टर्स ही एक्स फैक्टर्स है। और हार्दिक पांड्या ने अच्छा इंप्रेस किया है। इट लुक्स लाइक कि मुंबई इंडियंस में जब तक वो थे, ही वाज वो थोड़ा सा उनका रोल दबा हुआ था। ही वाज नॉट श्योर अबाउट हिज पोजीशन, ही इज अ बैट्समैन, ही इज अ बॉलर, व्हाट इज ही वाज जस्ट अ यूटिलिटी प्लेयर। But when he has been given the opportunity to captain the side, he has shown tremendous maturity, even in the field, the kind of the body language which he shows, remarkable. It's very good. I mean, I am very much impressed by Hardik Pandya in here. Okay, same here, very much impressed by Hardik Pandya. लास्ट सवाल है अपने आज के मैच के बारे में, क्योंकि मैच है दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर का। एक मैचअप जो आप देखना चाहते हैं आज? Umesh Yadav versus Prithvi Shaw. Let's see. Okay, Umesh Yadav versus Prithvi Shaw. The match is going to start in a short while from now, around about 13-14 minutes. Do watch the match and come back tomorrow evening, same time, to chat with us live on CricBait IPL Adda. जब तक डाउनलोड करिए एडिटर जी की ऐप और फॉलो करिए हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ऑल्सो कमेंट करके जरूर बताइए कि आज दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच में ये मैच कौन जीतने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज ध्यान रखिए अपना।